China is eyeing Gilgit Baltistan, a region of immense geostrategic significance. Pakistan is currently considering a proposal to lease the region to Beijing for 50 years. According to the US-based think tank, Middle East Media Research Institute, the Pakistani move is aimed at cementing its all-weather relations with China following the irreparable rupture in ties with US. The decision to launch the Pakistan-China strategic program for Gilgit Baltistan was probably taken during Army Chief Gen Ashfaq Parvez Kayani's visit to China in January 2012, said a report titled Pakistan's Deteriorating Situation, Strained Relations with America, Deliberation on Leasing Gilgit Baltistan to China for 50 years. It sent shockwaves in the region, which has been oppressed by Pakistan for decades. हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से चाइना को ये इलाके 50 साल के लिए लीज पे दिए जा रहे हैं। हमारा ये मौक़िफ़ शुरू दिन से रहा है कि हम अपने एक एक इंच खित्ते की हिफाजत करेंगे, चाहे उसके लिए हमें जो भी कीमत चुकानी पड़े हम चुकाएंगे, और हम अपने इलाके की एक एक इंच की हिफाजत करेंगे और किसी को यहाँ पे कब्जा करने नहीं देंगे। China wants control over the strategic area and is building high-speed rail and road links, deploying its army and is setting up business ventures in the region. The Chinese People's Liberation Army is assisting Chinese companies in extending the Karakoram Highway, built to link China's Xinjiang province with Pakistan. They're also working on dams, expressways and other projects to cut the transportation time for oil and gas to the Gulf from roughly 20 days to less than 4. हमारे जो हिस्से तकसीम दर तकसीम किए गए हैं बालोचिस्तान रियासत के, उसमें ताशकुरगन का इलाका 1962 में चीन के हवाले किया गया और उसके बदले में चाइना की तरफ से शाहराह कराकोरम की तामीर हुई। हम लोगों को ये बताया गया कि ये चाइना ने ये तामीर मुफ्त में की है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। हमारा बहुत सा इलाका चाइना ने कब्जे में ले लिया। The people of Gilgit Baltistan, who have been fighting for independence from Pakistan, are not ready to be a part of China. हम अपने तमाम इलाकों की रखवाली के लिए कफन पोश होकर बाहर निकलेंगे और किसी को ऐसा करने नहीं देंगे। चाइना के भी सुनने में यह आया है कि वो भी नई कंपनियां लाकर यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पर इस इलाके को हथियाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी हम मुज़ाहिमत करेंगे। Gilgit currently has a large quantity of gemstones, but due to the lack of adequate technology and investment, exploitation of these resources has been relatively low. China is eager to exploit these natural resources, but the people of Gilgit Baltistan are dead set against increasing Chinese presence in the region. The region, with high illiteracy rate, poverty and unemployment, is fighting for sovereignty from forcible occupation by Pakistan.